वरुण, लोग आपको देखकर डिशुम डिशुम कर रहे हैं, लोग मुझे देखकर आजकल क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी गाने की एक लाइन है यार कि 2 साल में होंगे तेरे बच्चे मेरे बच्चे. It's becoming a big problem, man. But what a song, what a song. जाने मन I have this fantasy that I will. Thank you. 1, 2, 3. You do the okay, I'll do the Jaane Man. Are you ready? 1, 2, 3. Jaane Man. That was such a damn squib. Okay. Okay. If Varun does it and John does it, maybe you'll be louder. So 1, 2, 3. If you can say Jaane Man and they say Okay. 1, 2, 3. John. Jaane Man. Jaane Man. Jaane Man. Jaane Man. Okay, now we're getting too excited. Now we're done, Janeman. Now we're done. All right, I'd like to open the floor for questions. हमारे दोस्त हैं मीडिया से जो आए हैं. I'm sure you have questions about the man bun, for example. So if you could please raise your hand if you have a question, we'd love to take them. Sir, in the yellow shirt, you look lovely. Please, सवाल पूछिए, sir. अब पहला सवाल यही है कि फिल्म के दूसरे भाग की चर्चा हो रही है. एक आपके फैन ने उसका पोस्टर भी बनाया है, ट्वीट किया है आपको वरुण. तो मतलब आपकी पूरी टीम है जो बनाना चाहेगी भाग 2 और आप लोग काम करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा भाग 2 के बारे में क्या कहूँ, वो बस फैन आर्ट था. एक पोस्टर आया था इंटरनेट पे जहाँ अक्षय कुमार जी और जैकी चैन को भी जोड़ा गया था डिशुम 2 के साथ. बट आई थिंक साजिद सर एंड रोहित शुड आंसर दैट कि क्या आप डिशुम भाग 2 बनाना चाहते हैं. You mean डिशुम? हाँ, तो वो अगर बनेगी, obviously if we find a exciting enough script and journey for Kabir and Junaid to come back to, but इतना तो जाहिर है, एक ही मतलब कम से एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तक, but कबीर और जुनैद को बहुत प्यार मिला है and they're extremely iconic characters and I've got a feeling that people would welcome them back, you know, if there's another part. जॉन आपके सामने इधर, आपने कई बार ये जिक्र भी किया था कि डिशुम का कई सीक्वल बनना चाहिए और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा था. तो आपको लगता है जैसे वायरएफ ने एक धूम की फ्रेंचाइजी का प्लेटफॉर्म सेट किया, उस तरह से ये भी फिल्म कर चुकी है या आपको लगता है कुछ होगा इसका? नहीं, आई फील 100% होना चाहिए, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन हमारे जो प्रोड्यूसर है साजिद और हमारे जो डायरेक्टर है रोहित, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है. इफ़ रोहित फाइंड्स द परफेक्ट स्क्रिप्ट और मिस्टर साजिद नडियाडवाला को ग्रीन लाइट करना पड़ेगा उसको, बिकॉज ही इज़ गॉट अ कमर्शियल सेंस ऑफ क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. आई थिंक एज एक्टर्स वरुण और मैंने काफ़ी डिस्कस किया है. हम लोग तो अपने आप में डिस्कस करते हैं कि हमें पार्ट 2 में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट वो कोई मायने नहीं रखता टिल दे फाइनलाइज. तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट और मेरे हिसाब से इट शुड बिकम अ फ्रेंचाइज. वरुण, आपसे एक सवाल है. वरुण, हाँ जी मैम. आप इनोसेंस और नॉटीनेस को एक साथ कैसे ब्लेंड करते हैं? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी. It's like a Tinder question, but anyway. Hi, Rohit. Yeah. Varun is known for his, chocolate boy image. Was it a conscious decision on your part to not to show his romantic angle in the movie? Actually, the film, it's a 36-hour story, you know. It's like a 36-hour action thriller, the foundation of the film. So they actually don't even, if you've noticed, Kabir and Junaid, they're driving together through the film. They don't even ask each other whether they have parents, whether they have, there's absolutely nothing besides the assignment that they talk of, you know. So there's actually no room for romance, you know. I don't see any scope for Junaid to break into a song suddenly because his one single-minded focus is to find the cricketer. You know, we've shown him very, very involved in the case. Hi Varun. Hi, how are you? Good. How are you? My question to you is, a lot of people, including John, have said that you are a perfect combination of Salman meets Govinda. How do you take that? What do you have to say about that? I think Rohit has a good answer for that. I think Varun's a perfect combination of both my parents. हेलो जॉन, आपसे सवाल है. आपकी जोड़ी हमेशा वरुण, अक्षय और अभिषेक के साथ पसंद की गई, तो हम ये माने कि ब्रोमांस में आप उस्ताद हैं 2 हीरो वाली फिल्म में. ब्रोमांस में हीरो को रोमांस करने में उस्ताद है ये. How many heroines are there in the industry? I mean, but there are so many more heroes, तो उनके साथ ही मैं ब्रोमांस करूँगा. But honestly, I think I'm very, not in the wrong way, but I'm very comfortable around men, and मुझे अच्छा लगता है.
because Varun, I'm just gonna leave you right there, Sounding like boys. Sameer Ghazi, Have your yeah. moment, like yes, a male Sameer only. Ghazi. नहीं, but I think I genuinely इसे लड़कियां बहुत पसंद करती है, लेकिन इसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है. I just think it's bonding, and I get along very well with Abhishek, with Akshay, and with Varun. I really get along well. Varun, what's up with your new look? You also tweeted a picture after getting a haircut. Is it a look for your film or something else? No, it's for the Dream Team tour that I'm going for. We're down to our last two questions. Make it count. Thanks. साजिद सर यहाँ पे इस तरफ, इस तरफ. इधर हाँ से। जी सर. मेरा क्वेश्चन आपसे है और रोहित सर से है। अगर आपको एक शब्द में कहा जाए कहने के लिए तो आप क्या कहोगे? डिसुम की सफलता का कारण क्या है? परिणीति और वरुण सर का किस, वरुण या फिर जॉन सर और जैकलिन? मुझे लगता है सारी क्रेडिट वो किसके लिए है, नहीं सारी पिक्चर तो बना ही नहीं हम लोग ने. मे बी ब्रैडमैन ब्रैडमैन का बहुत बड़ा हाथ है, वो बुलडॉग का, और वो इस वक्त इसी उसके डेट्स नहीं है तो वो चला गया नहीं, उसको. क्योंकि वो आए कहीं थे और जाना था इधर, shooting के लेकिन लिए. इतने कैमरास और फ्लैश बल्ब्स देख के वो डर गए. Rohit, my question for you here. Yes, Here. sir. On the left. Rohit, whose concept was it to get Akshay Kumar in and in that fashion? Because that is one of the highlights of the film, even though these people are dominating. Yeah, no, it's that role was always in there, and the intent of that role was actually, besides on a surface level, it's just a comedy scene, but deep down that scene actually says a lot, because in our country, for some ridiculous notion, you always perceive a homosexual in a certain way and feel he's not as strong as a straight man. But across the world today, there are popular athletes also that are gay men, you know, and getting someone like Akshay Kumar only symbolizes that he's playing a homosexual in the film, but he takes the mickey out of both the cops, you know, who are two extremely tough and strong-looking men. And we've clearly shown that the homosexual is stronger than the two straight men. Longer, but the film was about eventually finding the cricketer, so they had to leave the pool party. 100%. It's a character that you miss, you know. That I completely agree, that it would have been a lot more fun, but then if we come back for another one, you'll see a lot more of Sameer Ghazi. Maybe you'll see less of us and more of him and the dog. Varun, since you and John both have been accepting Dishum challenges from everyone, we received a lot of requests from your fans who said that they want you and John to do this Akshay and Saqib selfie from the film. So that is a Dishum challenge from you guys. For you guys, will you all be doing it? The Belfi, you mean? The pelfie, yeah, the pout selfie. Use a mic only. There's a phone over. I'll send you. Here you go. Do you have your phone? Here you go, John. First, we